Hello, good evening, everyone. I'm back with the book reading session, The Power of Your Subconscious Mind by Joseph Murphy. And we were seeing yesterday that prayer therapy is the combined function of conscious and subconscious mind, scientifically directed. By many people, it has been proved that yes, whatever prayer therapy works, whenever we say that due to prayer someone get cured, someone get healed up, so there also conscious and subconscious mind is functioning together. So there is always, it has been seen that subconscious mind is the original root cause of healing, of getting anything desire desired results or desirable results, whatever is required in life. That is only possible by empowering the subconscious mind. So we'll go further with how Joseph Murphy has explained us faith healing, what it means, and how blind faith works. Yes, friends, what is popularly known as faith healing is not the faith spoken of in the Bible, which means a knowledge of the interaction of the conscious and subconscious mind. Faith is nothing but the interaction of the conscious and subconscious mind. A faith healer is one who heals without any real scientific understanding of the powers and forces involved. He or she may claim a special gift of healing, and the sick person's blind belief in him or her is, or in his or her powers may bring results. So, faith in someone may even bring the results of healing. That is surely faith and belief is such things that we can see that person get cured, get healed up because of the faith in that person, or in that area wherever the person has gone, whether it is a temple or is some god, anywhere where you can see that yes, something where we can believe that yes, I will get cured or I will get healed at this place because there is some power I can feel, then definitely the result will come. In many parts of the world, traditional healers treat their patients by dances, incantations, and invocations of spirits. A person may be healed by touching the relics of a saint, wearing special ritual garb, lighting a whole incense or candle, even lightening of one candle or incense stick, whatever we uh, light up at that time, may even heal the person. That may also happen. Or drinking a mixture of brewed herbs, some herbs also sometimes some person gives for drinking, that also can heal uh, the person, or the sick person get cured out of it. Anything that leads the patient to honestly believe in the method or process will make a healing more likely. Wherever the person, the patient himself or herself will have belief, in that place there will be always definitely a healing which will take place. Any method that causes you to move from fear and worry to faith and expectancy will heal. Anywhere, if you have some doubt, some fear, some worry about whether this will happen or not, whether it is correct or not, then nothing will happen. No healing will take place. But when you will have blind faith, belief in that uh, thing, that means you will definitely show some results, and the results are seen in the form of cured person or healed person. Many people claim that because their individual theories produce results, they must therefore be correct and true. As we have already seen, this cannot be right. So we have seen that this cannot be right always. No. Uh, to illustrate how blind faith works, think back to our discussion of the Swiss physician Franz Anton Mesmer in 1776. He claimed to have produced many cures by stroking the bodies of his patients with magnets. बहुत बार उन्होंने बताया कि मैंने मैग्नेट से बहुत सारे क्योर किए, and with that magnet many people got cured, and simply made pauses with his hands of at a short distance from the patient. This too worked. To explain the success of this new procedure, Mesmer evolved the theory of animal magnetism. This he held to be a fluid that pervades the universe but is most active in the human organism. He claimed that this magnetic fluid was being transmitted from his hands to the diseased bodies. The magnetic effect was
passed on from his hands to the diseased bodies of his patients, and that this transfer of animal magnetism was what healed them. People flocked to him, and many wonderful cures were reported. Many things have been reported in this manner, and we have seen that even magnets sometimes give us very good results, and the person get healed up because of that. Mesmer moved to Paris. There, the government appointed a commission to investigate his cures. Its members included prominent physicians and members of the Academy of Science, of which Benjamin Franklin was a member. After a thorough inquiry, the commission admitted that Mesmer had produced confirmed cures. It held, however, that there was no evidence to prove the correctness of his magnetic fluid theory. It suggested that the effects were due to the imagination of the patients. तो ये मैग्नेट की थ्योरी के पीछे कोई प्रूफ नहीं मिला, बट ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे भी देयर वाज इमेजिनेशन ऑफ द पेशेंट्स. The patients were imagining, were visualizing that yes, they are getting cured, they are getting the relief, they are getting the diseases cured. So that is why they were showing the results. Soon after this, Mesmer was driven into exile. He died in 1815. Shortly afterward, Dr. James Braid of Manchester, England, undertook to show that magnetic fluid had nothing to do with the production of the healings of Dr. Mesmer. Dr. Braid discovered the patients could be thrown into hypnotic sleep by suggestion. Hypnotic sleep में अगर कुछ अच्छे suggestions देते जाएं, हम देते जाएं, तो it definitely affects our subconscious mind. इसलिए कहा जाता है कि सोते समय आपको जो भी कुछ अच्छा सुनना है वो सुन के सोइए, तो आपकी सारी रात जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पावरफुल रहता है, और आप वही चीज सुबह उठकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपके कंडीशंस में सुधार होगा. आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि आप बीमार हैं, आप सब प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. नहीं, आप सोते समय ये मानिए कि आप ठीक है. You are perfectly all right. There is no problem in your body. Then you see the results. You have to think positively while sleeping, because that is the time where this subconscious mind is in active state, or you can say in alpha stage, where it gets everything impressed on it, and that gives us the effect the next day also. So the next day will be boosting, will be energetic, will be feeling very happy, joyous. The feeling also will be good. So that way it is helping us. While they were in the hypnotic trance, he succeeded in producing many of the amazing phenomena that Mesmer had ascribed to animal magnetism. You can readily see that all these cures were undoubtedly brought about by the active imagination of the patients, together with the powerful suggestion of the health to their subconscious mind. एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा पावरफुल सजेशन टू द माइंड, हिप्नोटिक माइंड. जब उनको हिप्नोटिज्म में लेके गए, उनको इतना अपने अंदर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो हिप्नोटिक स्टेट में चले गए, और फिर उसके बाद जो पॉजिटिव वर्ड्स है, पॉजिटिव सेंटेंसेस है, वो बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावरफुली इंपैक्ट कर जाता है कि देन द एवरीथिंग विल बिकम ऑलराइट. It is not unfair to call this blind faith. इसको हम blind faith भी बोल सकते हैं, because neither the patients nor the practitioners understood how the cures were brought about. क्योंकि किसी को भी पता नहीं था ये कैसे हो रहा था. Subjective faith and what it means. The subjective or subconscious mind of an individual is as amenable to the control. It is as amenable to the control of his or her own conscious or objective mind as it is to the suggestions of another. It follows that whatever may be your objective belief, if you will assume to have faith actively or passively, your subconscious mind will be controlled by the suggestion, and your desire will be fulfilled. How your desire will be fulfilled? As your subconscious mind will be controlled by some suggestion, some positive suggestion which is given to your mind, your subconscious mind. It starts feeling that you are in that zone, you are in that place, and automatically the desires get fulfilled. The faith required in mental healings is a purely subjective faith. The way to attain it is to put an end to active opposition on the part of the objective or conscious mind. तो कॉन्शियस माइंड में कोई ऑपोजिशन नहीं करना है, जो भी कुछ बोला जा रहा है वो मान लेना है, तो ऑटोमेटिकली ब्लाइंड फेथ जो है वो डेवलप होने लगता है, और उस ब्लाइंड फेथ के कारण हमको डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योर हो जाता है, हीलिंग मिल जाती है. For an effective healing of the body to take place, it is of course best if both the conscious and subconscious mind are in a state of fully accepting faith. However, it is not always essential.
You can enter into a condition of passivity and receptivity by relaxing the mind and the body and getting into a sleepy state. In this drowsy state, your passivity becomes receptive to subjective impression. A man once asked me, how was it that I got a healing through a certain minister? When he told me that there is no such thing as disease and that does not exist, I did not believe a word he said. I thought he was insulting my intelligence and yet I was healed. How could that be? Because there was a conversation between a patient and a person who is getting who got healed. That patient got healed because of that person's advice or something. And when the talk was going on in between them, what has happened, the what the man asked him, he said that how is it possible that I got a healing through a certain minister? When he told me that there is no such thing called as disease, उन्होंने बताया उस समय पर उसको कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं जिसको डिजीज बोलते हैं। तो उस समय पे उस पेशेंट को वो विश्वास नहीं हुआ नेचुरली, क्योंकि वो सफर कर रहा था किसी न किसी डिजीज से, तो वो उस चीज को विश्वास नहीं कर पाया। बट फिर भी वो जो इंसान है वो ठीक हो गया, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये क्वेश्चन था उस पेशेंट का। As I told this man, the explanation is very simple. He was quieted by soothing words and told to get into a perfectly passive condition. क्योंकि उस इंसान को बिल्कुल शांत कर दिया गया और उसको उस पैसिव स्टेट में बहुत ही अच्छे वर्ड्स बोले गए। perfectly passive condition to say nothing and think of nothing for the time being, और बोला गया कि कुछ सोचो मत, कुछ बोलो मत, and you see the effect what will happen. The minister also became passive. He affirmed quietly, peacefully, and constantly for about a half hour that this man would have perfect health, peace, harmony, and wholeness. At the end of the half hour, the man felt immense relief and was restored to health. So, what has happened? That at that time the mind was very quiet, and whatever words were told to him, that those words were going in the subconscious mind and they were all getting the results to be seen. They were doing all those work what is required, what is the true health, that person restored with that healthy life. It is easy to see that his subjective faith had been made manifest by his passivity under treatment. Under the suggestion of perfect healthfulness by the minister were conveyed to his subconscious mind. The two subjective minds were then in rapport. दो सब्जेक्टिव माइंड्स थे, वो अपने रैपो में कनेक्ट हो गए, एंड देन एट दैट टाइम वी कैन सी दैट the result is being seen that the person was totally cured because उसके जो थॉट्स को था उसको बोला गया कि आप अभी क्वाइट हो जाओ, अभी आपको कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बोलना है। तो वो पैसिव स्टेट में चले गए और वो पैसिव स्टेट में जाने की वजह से हमको ये रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि जो भी कुछ सजेशंस जो डॉक्टर या जो भी इंसान उनको सबकॉन्शियस माइंड में दे रहा था वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, और वो एब्जॉर्ब होते होते उसने रिजल्ट दिखाना शुरू कर दिया और वो पर्सन क्योर हो गया। The wound was healed, the diseases were healed, so everything was healed at that time. If suppose the man had allowed his doubts about the healer's power and the correctness of his theory to surface, these would have acted as antagonistic autosuggestions. अगर उसी समय उस इंसान को सोचने दिया जाता, बोलने दिए जाता, तो वो क्या करता? वो कहीं ना कहीं अपना फियर दिखाता, अपना डर दिखाता और बोलता कि ये क्या चीज है, कौन सी थियोरी है, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे वरीज और डाउट्स होते हैं उनके माइंड में, जिससे ये जो प्रोसेस है वो काम नहीं करता। तो ये काम कब करता है? जब फियरलेस डाउटलेस कंडीशन हो, बिल्कुल आपके दिमाग में फियर नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए, कोई वरीज नहीं होने चाहिए, आपको पूरा बिलीफ होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ होना चाहिए कि यस एवरीथिंग विल बी ऑलराइट व्हाटएवर आई एम टेकिंग। The minister's suggestions would have been seriously handicapped or even totally frustrated. In this sleepy, drowsy state, however, the resistance of the conscious mind was reduced to a minimum. The subconscious mind of the patient was receptive to the minister's suggestions. It performed its function in harmony with those suggestions and a healing followed. तो ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो है कैसे वो सजेशंस को मानता है बिना किसी
आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी झगड़े के हम कॉन्शियसली अगर कुछ बात बोलते हैं, कोई हमें बोलता है, कोई हमें समझाता है, बताता है, तो हम कई बार आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और उस बिलीफ से पीछे हट जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो है ये सब ब्लाइंड फेथ है या पुराने ज़माने की बातें हैं या ये सब अंधविश्वास है, ऐसा भी बोल देते हैं हम लोग। तो ऐसा कंडीशन जब ना आए और हम सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कुछ बोला गया है उसको ब्लाइंडली बिलीव कर लें, क्या नुकसान है अगर हम बिलीव कर ले तो? कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, कुछ फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कोई होने वाला नहीं है। तो उस बिलीव को करके अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वो रिएक्शंस और वो एक्शंस होने लगते हैं बॉडी में और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो बहुत अच्छे से वर्क करने लगता है। द मीनिंग ऑफ एब्सेंट ट्रीटमेंट। Suppose while living in Los Angeles, you learned that your mother in New York City was seriously ill. Your first impulse might be to leave your home and job to go to her. But what if that were not possible? आप कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी कहीं दूर रहती हैं आपसे और उनकी तबीयत खराब हो जाए और हम पहले तो ये सोचेंगे कि हम जल्दी से छुट्टी लेके जहाँ भी हैं वहां से हम उनके घर चले जाएं या उनके पास चले जाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा दूर रहते हैं हम अगर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस और कंडीशंस ऐसी होती है कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि हम इमीडिएटली उस इंसान के पास पहुंच जाएं जो बीमार है। तब हम क्या करेंगे? एट दिस टाइम व्हाट हैज टू बी डन? अगर ये पॉसिबल नहीं है उनके पास पहुंचना, वुड यू हैव टू गिव अप एनी होप ऑफ लेंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर फेथ टू द प्रोसेस ऑफ योर मदर्स रिकवरी? क्या आप ऐसा कोई भी प्रोसेस छोड़ेंगे जिसमें आपकी मदर को रिकवर होने का कुछ चांस हो सकता है या आप कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं उनके लिए? डेफिनेटली नॉट। यू विल डेफिनेटली डू इट from long distance also you can do that. No, while you might not be physically present, your prayers would go to her nonetheless. So ऐसा नहीं है कि आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं है तो आप प्रेयर्स नहीं कर सकते। आप यहाँ बैठ के प्रेयर्स करके भी उनकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं, बिकॉज इट वर्क्स व्हेन वी प्रेयर इन ग्रुप और इन टुगेदर वी प्रेयर फॉर समवन हु इज फार अवे फ्रॉम अस, दैट पर्सन आल्सो गेट क्योर्ड अप। इट इज द फादर विद इन दैट डू द वर्क। इसमें कोई हमारी पावर नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी तरह से एक्ट करने लगता है और ये पावर हम में आ जाती है और ऑटोमेटिकली द हीलिंग इज सीन। There is but one creative mind. The creative law of mind serves you. What you must do is induce an inner realization of health and harmony in your own mentality. Its response is automatic. This inner realization, acting through the subconscious mind, operates in turn on your mother's subconscious mind. Your thoughts of health, vitality, and perfection operate through the one universal subjective mind. They set in motion a law of the subjective side of life that manifests itself through her body as a healing. तो यहाँ पे क्या हुआ? आपकी जो मेंटल सिचुएशन वो कैसी है इन रियलिटी, दैट विल बी डिपिक्टेड इन द हेल्थ फॉर्म में। हमको कैसे पता चलेगा कि वेदर वी आर हेल्दी, या हमारा कोई भी जो थॉट है वो हमारी बॉडी में वो किस तरह से चल रहा है, वेदर इट इज रनिंग एज नेगेटिव थॉट और वेदर इट इज रनिंग एज पॉजिटिव थॉट, इट विल बी ओनली सीन आफ्टर सीइंग यू, बिकॉज वॉट एवर टाइप ऑफ थॉट्स विल बी सीन, वही टाइप का इंप्रेशन हमारी फुल बॉडी देगी। If you are feeling energetic, you are feeling happy, there is a smile on your face, obviously the thoughts which are going on in the mind are very very powerful, and there is no doubt, no fear regarding anything, any situation. So that is the power which you have to develop in yourself. It is possible friends। मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि आप लोग ट्राई करके देखिए, ये चीज बहुत बहुत तरीके से पॉसिबल है। आप कई बार नेगेटिव होने लगते हैं तो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट जो पॉजिटिव थॉट्स है उसको डालना शुरू कीजिए। आप देखिए कैसे चेंजेस होने लगेंगे, घर में, रिलेशंस में, ऑफिस में, जहां पे भी आप हो वहां पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपके थॉट्स को तो कोई देख नहीं रहा है, आपके हाथ में है आपके थॉट्स, कैसे थॉट्स चलाने हैं, गलत थॉट्स चलाने हैं, किसी को अब्यूज करना है या किसी को गलत वर्ड्स बोलने हैं, ये तो सब हमारे हाथ में है ना, कोई और आके हमको नहीं बोलता है, हम अपने मन से बोलते हैं ये चीजें। तो वो चीजों का फायदा उठाना है आपको।
This inner realization acting through the subconscious mind operates in turn on your mother's subconscious mind. Your thoughts of health, vitality and perfection operate. आपकी मदर का कैसे कनेक्शन होता है जब वो दूर होती है और आप इधर बैठ के प्रे कर रहे होते हैं कि वहां पर जो भी कुछ हो रहा है वो आप इमेजिन कर पा रहे हैं और आप उस इमेजिनेशन में ये चीज अपनी इमेजिनेशन में देखना शुरू कर देते हैं, विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, उनके सारे ऑर्गन्स ठीक से चल रहे हैं और वो फिर से पहले की तरह चलना फिरना कर पा रही हैं। वो हर चीज आप विजुअलाइजेशन में देख लेते हैं। तो क्या होगा, ऐसी पावर्स जब हमारी तरफ से जाएंगी तो ऑटोमेटिकली वो पावर्स चेंज हो जाएंगी जो जब वो वहां तक पहुंचेंगी। Your thoughts of health, vitality, and perfection operate through the one universal subjective mind. They set in motion a law of the subjective side of life that manifests itself through her body as a healing. वो उसकी बॉडी के थ्रू हीलिंग दिखाएगा। हम लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा कि कैसे हमारी प्रेयर्स वहां तक गई। जब उनकी बॉडी हील होने लगेगी तब हमको पता चलेगा कि यस, हमारी जो प्रेयर्स है उन्होंने काम किया और उनकी बॉडी हील हो गई। In the mind principle, there is no time or space. The same mind operates through your mother and through you, no matter where you may be. In reality, there is no absent treatment as opposed to present treatment. ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एब्सेंट ट्रीटमेंट, प्रेजेंट ट्रीटमेंट। फॉर दिस यूनिवर्सल माइंड इज ओमनी प्रेजेंट। यूनिवर्सल माइंड जो होता है वो सब जगह प्रेजेंट होता है। आप कहीं पे भी किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, आपको हम प्रेयर्स भेज सकते हैं। Your treatment is a conscious movement of thought. Treatment में क्या होता है? There is a conscious movement of the thought which are very positive and very powerful thoughts. Main उसमें क्या करना होता है? Powerful thoughts जो है वो generate करने होते हैं mind के लिए। As you become conscious of the qualities of health, well-being and relaxation, these qualities will be resurgent in the experience of your mother. Results will follow. ये जो है वो रिजल्ट्स फॉलो करेंगे ही, बिकॉज वी नो दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन वी बिलीव इट, व्हेन वी डू इट विद बिलीफ एंड फेथ। Here is an actual example of what is misleadingly called absent treatment. A woman in Los Angeles learned that her mother in New York had suffered a coronary thrombosis. She could not go to her mother's side, but she prayed as follows. वो अपनी मम्मी तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन उन्होंने प्रेयर शुरू कर दी यहाँ पर रहते हुए लॉस एंजलिस में। The healing presence is right where my mother is. Her bodily condition is but a reflection of her thought. उनकी जो bodily condition है वो क्यों खराब है? Because उनके thoughts गलत चल रहे हैं। जब भी आप समझ जाइए फ्रेंड्स, जब भी आप बीमार हो रहे हैं, जब भी ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है, कुछ रॉन्ग सोच रहे हैं, कुछ नेगेटिव आप सोच रहे हैं किसी के लिए, तभी ये चीज होगी, अदरवाइज ऐसी चीज नहीं होगी। The healing presence is right where my mother is. Her bodily condition is but a reflection of her thought life, like shadows cast on the screen. I know that in order to change the images on the screen, I must change what they reflect. I now project in my own mind the image of wholeness, harmony, and perfect health for my mother. तो इस तरह से उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया, जो बहुत दूर थे उनकी मदर, और वो प्रेयर ने वर्क करना शुरू कर दिया, बिकॉज द वर्ड्स वर वेरी ट्रू. The words which are explained here, they are very, very meaningful. I know that disease has no ultimate reality. If it had, no one could be healed. अगर कुछ reality होती ultimate तो कोई healing होती ही नहीं थी किसी को भी. I now align myself with the infinite principle of love and life. ये principle के साथ जब आप connect हो जाते हो तो बहुत life change हो जाती है, love and life. And I know and decree that harmony, health, and peace are now being expressed in my mother's body. She prayed in this manner several times a day. After a few days, her mother had a remarkable recovery. ये prayers उन्होंने continuous जारी रखी और ये देखा गया कि कुछ दिनों बाद mother was very, very, very cured. Her cardiologist was amazed and complimented her on her great faith in the power of God. जब कार्डियोलॉजिस्ट ने उनको चेक किया तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत ही अच्छे से इनको सराहा कि यस, आपका जो फेथ है गॉड के ऊपर, उसके कारण आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं. The conclusion arrived at in the daughter's mind and accepted by her with perfect faith set in motion the creative energy within the universal subconscious mind. This manifested itself through her mother's body as perfect health and harmony.
What the daughter felt as true about her mother was simultaneously expressed in the experience of her mother. Whatever daughter was feeling about the mother, whatever truthfulness or honesty or whatever characters, and that stand very good for the mother for healing. तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें हीलिंग बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाती है. Releasing the kinetic action of the subconscious mind, a psychologist friend of mine told me that a biopsy had shown the presence of cancerous cell. आपको पता है बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, कहीं से भी अगर कुछ ट्यूमर डिटैच किया जाता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, तो उस पार्ट को हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, जहां पर ये पता चलता है कि उस रीजन में कहीं कोई कैंसर सेल्स तो नहीं प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि अगर एक भी कैंसर सेल प्रोड्यूस हो गया तो वो बहुत सारे सेल्स बनाकर डिवाइड करके पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. A psychologist friend of mine told me that a biopsy had shown the presence of cancerous cells in a vital organ. Her oncologist recommended a painful and dangerous treatment. और oncologist ने उसके against में बहुत ही dangerous एक treatment बता दिया. Before agreeing, my friend tried another approach. लेकिन treatment में जाने से पहले उन्होंने एक approach और किया. Every night before going to sleep, she quietly affirmed, every cell, nerve, tissue and organ is now being made whole, pure and perfect. My whole body is being restored to health and harmony. Yes friends, this definitely works. आप बार बार रोज बोलिए, अगर आप बीमार हैं तो आप ये बोलते रहिए कि my whole body is being restored to health and harmony. हेल्थ भी आ गई, पीस भी आ गया, हार्मनी भी आ गई, सब कुछ आ जाएगा आपकी लाइफ में. A complete healing followed in about a month's time. Subsequent tests showed that the cancerous cells were no longer present. जो cancerous cells हुए भी थे present, डेवलप होना शुरू भी हो गए थे, वो भी बंद हो गए, because the continuous mind programming was done to this patient. I was very impressed by this, but also curious. I asked her why she repeated her affirmation prior to sleep. She told me, once it is set in motion in a certain direction, the kinetic action of the subconscious mind continues throughout your स्लीप. तो एक बार आप जब ये बोलना शुरू कर देते हैं, जब आप स्लीप मोड में जाते हैं, तो आप धीरे धीरे देखिए कि जैसे जैसे आप नींद में चले जाओगे, तब भी ये जो बातें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, आपको सुनाई देंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आप उसको समझ पाओगे, आप उसको माइंड में रख पाओगे फॉर लॉन्गर टाइम. और जब आप नेक्स्ट डे उठोगे, यू विल बी वेरी फ्रेश, very energetic, and you see what changes happens in your life when you think in this manner. You feel completed, you feel that so many tasks you have completed, so big tasks you have completed. This also will be possible from your side or by you. She told me once it is set in motion in a certain direction, the kinetic action of the subconscious mind continues throughout your sleep. That is why it is so critical to give the subconscious mind something beneficial to work on as you drop off into slumber. This was a very wise answer. Notice also that in thinking of harmony and perfect health और harmony के लिए भी आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा. She never referred to her condition by name. I strongly suggest that you stop talking about your ailments or giving them a name, especially in the hours leading up to sleep. जब आप सोने जा रहे हैं, तब अपनी बीमारी के बारे में उस शब्दों को आप नहीं यूज करेंगे. उससे क्या फायदा होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात कभी नहीं आएगी और आप धीरे धीरे तरक्की करने लगेंगे. The only sap from which they draw life is your attention and fear of them. Like the above mentioned psychologist, become a mental surgeon. Then your troubles will be cut off the way dead branches are pruned from a tree. जैसे हम डेड ब्रांचेस को तोड़ देते हैं ना, कोई भी ट्री में अगर कुछ ब्रांचेस डेड हो गई तो उसको हम लोग तोड़ के फेंक देते हैं. तो सेम वे योर थॉट्स एंड योर मैसेजेस विल आल्सो बी. On the other hand, if you are constantly naming your aches and symptoms and discussing them, you give them power over you. अगर आप अपनी बीमारी को बार बार डिस्कस करते रहेंगे, तो आप उस बीमारी को ज्यादा पावर देंगे और वो बीमारी होती जाएगी, वो ठीक नहीं होगी. You inhibit the kinetic action that releases the healing power and energy of your subconscious mind. Subconscious mind की एनर्जी और जो kinetic पावर जो है, जो healing power जनरेट हो रही है, उसकी भी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी मिलके आप फॉलो कर सकते हैं इस मेथड को, और वो सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल बना देगी. Furthermore, by the law of your own mind, these imaginings tend to take shape. ये imaginations ही है जो हमको
बाद में पूरा शेप ले लेते हैं. As the thing I greatly feared, fill your mind with the great truths of life. आपके माइंड को पूरी तरह से जो सच्चाई है जिंदगी की, दुनिया की, उससे भर दो. आपको पता है कि दुनिया में सच क्या है. किसी से नहीं डरो, कुछ भी फियर नहीं करो, किसी की बात की चिंता नहीं करो, कुछ भी मत करो. यू जस्ट टेल योर माइंड दैट यस, दिस ऑल कैन हैपन. Law of your own mind, these imaginings tend to take shape. As the thing I greatly feared, fill your mind with the great truths of life and walk forward in the light of love. Yes, fill your mind with love and affection and joy, happiness, all positive words. जितने positive words है उससे भर दो अपने mind को, subconscious mind को, और आप देखो कितना मजा आ जाएगा आपको लाइफ में, कितना अच्छा लगेगा. Every moment you will be enjoying in your life. So what are some main bullet points in this chapter? That is miracle healing, mental healings in modern times. जो हम फिफ्थ चैप्टर पढ़ रहे थे वो भी आज खत्म होने को है. उसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेंगे. फाइंड आउट व्हाट इट इज दैट हील्स यू. पहले आप अपने आप में फाइंड करिए कि आपको कौन सी चीज से ज्यादा अच्छा लगता है जो हील कर सकती है आपको. रियलाइज दैट करेक्ट डायरेक्शंस given to your subconscious mind will heal your mind and body. और आप बार बार जब करेंगे तो रिपीटिशन से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पावर मिलेगी और आप धीरे धीरे हील हो जाएंगे. आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी. Develop a definite plan for turning over your requests or your desires to your subconscious mind. जितने भी आपके requests हैं, desires हैं, जो भी है वो आप नोट डाउन करिए और उसको बार बार रीड करिए जोर जोर से. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सुन लेगा और फिर वो उसमें स्टोर कर लेगा. इमेजिन द एंड डिजायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी. जो एंड पॉइंट है उसको पहले डिजायर कर लो, देख लो उसको और देखो, सोचो कि आप रियलिटी में वो एंजॉय कर रहे हो. फॉलो इट थ्रू एंड यू विल गेट डेफिनेट गोल रिजल्ट्स. ऐसा अगर हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स जरूर जरूर आएंगे. डिसाइड व्हाट बिलीफ इज. नो दैट बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड एंड दैट व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. यस, जो सोचोगे वो पाओगे. यू थिंक यू क्रिएट. योर इनर वर्ल्ड is creating your outer world. Whatever in the mind you are thinking, you are creating that. It is foolish to believe in sickness or in anything that will hurt or harm you. Believe in perfect health, prosperity, peace, wealth and divine guidance. हमेशा ये सोचो ही नहीं कि आप बीमार हो. हमेशा सोचो that you are believing in health. आपके पास perfect health है, prosperity है, peace, wealth, divine guidance, सब कुछ है आपके पास में. कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं है या आपके पास कमी है. Great and noble thoughts upon which you habitually dwell become great acts. जो भी आप great thoughts बार बार आप डालोगे तो आप देखोगे वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप वैसे ही सोचने लगोगे. हमेशा आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी. अप्लाई द पावर ऑफ प्रेयर थेरेपी इन योर लाइफ. कई बार आप अप्लाई कर सकते हैं. कोई बहुत ज्यादा तकलीफ आ जाती है किसी को तो आप प्रेयर्स कर सकते हैं उनके लिए. तो प्रेयर थेरेपी आप अप्लाई कर सकते हैं. चूज अ सर्टेन प्लान, आइडिया और मेंटल पिक्चर. कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. मेंटल पिक्चर भी ले सकते हैं जो चीज आपको इमेजिन करने में हेल्प कर सके. यूनाइट मेंटली एंड इमोशनली विद दैट आइडिया. उस आइडिया के साथ में अपने आप को मेंटली और इमोशनली आप अटैच कर लो. एज यू रिमेन फेथफुल टू योर मेंटल एटीट्यूड, योर प्रेयर विल बी आंसर्ड. जैसे ही आप अपने मेंटल एटीट्यूड के ऊपर फेथफुल रहोगे, आपको पता लगेगा कि यस, आई एम अंडरस्टैंडिंग इट व्हाट आई एम टेलिंग. मेरा सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ रहा है, ये बहुत अच्छा है. देन ऑटोमेटिकली यू विल सी द रिजल्ट्स एंड दैट विल बी ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स. Always remember, if you really want the power to heal, you can have it through faith. Healing power हमेशा faith से आती है, which means a knowledge of the working of your conscious and subconscious mind. Faith comes with understanding. Faith कैसे आएगा? Understanding से. और जो knowledge है, that is a combination of conscious and subconscious mind. So you know always it is possible to have faith whenever we have to get healed. तो faith रखना बहुत जरूरी है. Blind faith means that a person may get results in healing without any scientific understanding. कोई भी साइंटिफिक वे से नहीं सोचना है और डायरेक्टली आप उस पर विश्वास करने लग जाओ. ब्लाइंड बिलीफ रखो, देखो आप कैसे मिरेकल्स दिखाई देंगे आपकी लाइफ में. Without any scientific understanding of the powers and forces involved. Learn to pray for your loved ones who may be ill. जो दूर बैठे हैं हमारे घर के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोई भी, तो हम उनके लिए भी प्रेयर करके उनको ठीक कर सकते हैं. क्वाइट योर माइंड. माइंड को एकदम रिलैक्स कर देना है, क्वाइट कर देना है. एंड देन योर थॉट्स ऑफ
Health, vitality, and perfection operating through the one universal subjective mind will be felt and made manifest in the mind of your loved one. तो ये आपकी माइंड में जैसे जैसे मैनिफेस्ट होने लगेगा, वैसे ही ये आपकी मदर, आपके फादर, आपके ब्रदर, सिस्टर, कोई भी जो आपसे दूर बैठे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके माइंड में भी ये फ्लो करेगा। जो भी बीमार है, जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं, वो लोग ठीक होने लगेंगे, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, इस तरह से ये जो प्रेयर हीलिंग है वो भी बहुत पावरफुल है, वो एक्ट करती है। मॉडर्न टाइम्स में हम लोग ज्यादातर ये प्रेयर हीलिंग का अनुकरण करते हैं, इसको हम मानते हैं, और बहुत सारे मिरेकल्स देखने को मिले हैं विद दिस। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टॉप हियर। फर्दर the next chapter, that is the sixth chapter, practical technique in mental healings, that we will study in the tomorrow's lesson. Okay, thank you then. Thanks for listening, thanks for joining, whoever has joined. Bye bye, have a nice day, enjoy your day with positivity. RRP, rag rag mein positivity. Yes, friends, write on your hands and be positive always. Whenever you go into negative side, just write it RRP on one palm, and see whenever you will see that, you will remember that yes, I have to remain positive. अगर कहीं पे भी थोड़ा negative जा रहा होगा, तो automatically वो hand पे लिखा हुआ आपको याद दिला देगा. This activity you do it. See friends, what change you will feel. बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हम करेंगे आगे के सेशंस में, आप लोग जरूर आइए। 4 to 5 के बीच में मैं कभी भी ज्वाइन हो जाती हूँ। 4:30 according to the sometimes some problems happens with the net connection or something. If does not happen, then we will be definitely between 4 to 4:30 coming here. Okay, bye bye, have a nice day.